So today we learn about EMF, terminal voltage, internal resistance of a cell. इसके बारे में we will learn. So उसके उसके पहले आपको learn करने के लिए you have to know about cell. Cell क्या है, cell function क्या है, how it looks कैसा है, we'll see. Okay. So tell me, electrical cell what it gives? It gives what? Cell. Cell देखा होगा ना, remote का cell वगैरह. It gives what? Which energy? It gives electrical energy देगा. Potential energy कैसे देगा? Electrical energy, right? So it is a device which provides electrical energy to all circuit elements. It provides electrical energy to all circuit elements. Okay. Cell produce charge. Tell me. Cell will produce charge. Yes or no? साथ बोलो. Cell produce charge or not? Yes, sir. No. Cell does not produce any charge. क्या करेगा? Cell का काम क्या है? देखो, cell do not produce charge. Cell only circulates the charge in the circuit. Suppose this is a conductor. Conductor में you have millions of electrons are there. Okay, millions of electrons are there. I will connect a cell. Okay, when I connect the cell, cell क्या करेगा? It will not producing charge because of positive negative potential difference के वजह से the electrons start flowing. The charges will make, the cell makes the charge to flow. So cell only circulates the charge in the circuit. Cell circulate करेगा, वो उसका काम वही है. Until unless potential difference is there, cell charges will be circulating. अगर potential difference same हो गया तो रुक जाएगा. We will take the battery and we'll throw again. We will take the new battery. Okay. So cell do not produce any charge. So क्या करेगा cell? Cell maintains potential difference which forces the charge in the circuit. The cell के वजह से the charges will flow. If there is no cell, the charges will not flow and there is no current only in the circuit. उतना इंपॉर्टेंस है सेल. Okay. So now थोड़ा सेल के to know the terminologies we have to know और भी डिटेल में सेल के बारे में. ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में लर्न करेंगे. देखो, आई टोल्ड सेल इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वेयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमिंग फ्रॉम? केमिकल एनर्जी से. ओके, केमिकल एनर्जी. सो हाउ द सेल इट लुक लाइक दिस. ओके, दिस इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इसमें इलेक्ट्रोलाइट इज देयर सॉल्यूशन. दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट and these are called electrodes. These are called electrodes. Okay, so what will happen when you dip these electrodes in the electrolyte? Okay, when you dip these electrodes in the electrolyte, okay, क्या होगा? There will be an exothermic redox reactions will happen. Exothermic means energy is released. Redox means reduction and oxidation. दोनों reactions will happen इसमें. So क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में when you dip the electrolyte, we will get exothermic redox reaction के वजह से this will acquire a negative charge. These electrodes will apply a negative charge and this will apply a positive charge. and electrolyte कैसे यूज करेंगे? कॉपर है तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स है तो कॉपर सल्फेट यूज करेंगे. एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम सल्फेट यूज करेंगे. ओके, उसका अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज. ओके, सो रिएक्शन की वजह से दिस this electrode will behave like an anode. This electrode will behave like a cathode. Okay, so and then क्या होगा? मतलब what will happen? First step is what? When you dip, exothermic redox reactions are happening. उसके वजह से there will be potential developed on the electrodes. So इसको negative potential बोलते हैं. I can call V minus V minus or V naught minus V naught. and ये वाला और ऐसे लिखेंगे सिंबल का नेगेटिव पोटेंशियल. राइट, वी कैन राइट लाइक दिस माइनस नेगेटिव. इधर क्या होगा? पोटेंशियल V
plus. So potential is developed across anode and cathode. And I connected with the external resistance. I connected with the external resistance. Any cell may, if you see, if you open the cell, there will be plus will be there, minus will be there. Two electrodes will be there. देखा होगा ना plus and minus वाला. So because of this one. Okay. Now external circuit is closed, right? So what will happen? A excess of electrons are there. Electrons start flowing from negative to positive because excess electrons are right. Electrons will flow from here to here. Okay. So that means current is flowing in the opposite direction to that of electrons, right? Now इधर आएगा electrons इधर आएगा. Okay, this external resistance can be bulb होने दो, कुछ भी होने दो, anything. Okay, now electrons should come from here to here, right? To complete the circuit, the charges should come from here to here to complete the circuit. But if you see carefully, a positive charges इसको क्या करेगा? Electron is negative charge, right? A positive charge इसको क्या करेगा? Attract करेगा. So electrostatic force is acting like this. And ये negative क्या करेगा? इसको repel करेगा. So electrostatic force is acting on this. Even though this electrostatic force is pulling, this is pushing, but electrons are crossing from here to here. Then only the bulb is glowing. Why this is happening? Tell me, Sadvik. Sadvik, क्या सोच रहे हो? Something नींद में है, slow. आज बहुत क्या है? Thinking of anything, functions, festivals, birthdays, anything? No, right? Okay. चलो. Tell me. Sadvik, explain करो इधर तक. What I told? Explain करो once. बोलो. See, आपको नींद आ रही तो you can join, you can play after next class में you can see the video and come. But थोड़ा इधर देखो, कैमरा देखो, बात करो. Tell me, explain करो पूरा. मैं ऐसे रहेगा. That's why I'm telling you. That's telling you. I can understand you are somewhere mind में, somewhere. I'll talk to your parents today. Why ऐसे है क्यों? They scolded your parents today morning, or you not yet? I'll give 5 minutes. You can eat and come. Okay. चलो. देखो इलेक्ट्रोलाइट सी दिस ये बेसिक समझ में आए तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे निकलता जाएगा. सिंपली क्वेश्चंस नहीं है तो नहीं आएगा. रैंक असल सोचेगा. सम पीपल विल थिंक दैट आईआईटी आएगा, नहीं तो नहीं एनआईटी आएगा. नहीं आएगा. क्यों आएगा? इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, सो मच विल बी इंटरेस्टेड, आपको मार्क्स भी बढ़ेगा, क्लास का मार्क्स भी बढ़ेगा, एंड प्रैक्टिस खत्म, यू नो, विल नॉट टाइड. यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग, प्लान करके. ये 1 year ओनली, लास्ट 1 year इज देयर. ओके, चलो. once again I'll tell you. देखो, there is a electrolyte solution. Electrolyte solution में हम लोग क्या कर रहे हैं? We are inserting 2 electrodes. These are called electrodes. Okay. So when you insert the electrodes in the electrolyte, इधर क्या हो रहा है? Exothermic redox reactions are happening. Because of exothermic redox reactions, this electrode will get a negative charge and this will get a positive charge. See, हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट वी इंसर्ट इलेक्ट्रोड्स. बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा. आई विल कनेक्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी बल्ब और समथिंग. इट विल ग्लो. कभी भी देखा, कभी सेल में लगा के इधर एक वायर करंट करो, इधर बल्ब से करंट करो, द बल्ब विल ग्लो. द बल्ब विल गो. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? बिकॉज ऑफ एक्सेस नेगेटिव charges start flowing from here to here. Okay, the electrons start flowing from here to here. That means current will flow in the opposite direction. Okay, now electron will be coming, and it has to cross this electrolyte. Okay, it has to cross this electrolyte. But when crossing, if you see carefully, this is positive charge. Electrons are negative charge. क्या होगा? ये attract होगा, attract करेगा. Electrostatic force will be in the opposite direction, right? इसको pull कर रहे हैं. And ये क्या करेगा? इसको negative and negative will repel, right? So electron को push कर रहे हैं. Okay. So electron को इस तरफ भी खींच रहे हैं, उस तरफ भी push कर रहे हैं. But even though those two forces are acting, the electrons are crossing from here to here and completing the circuit. Why happening? What is happening here? Why the electrons is crossing from here to here? Because ये positive charge है, ये negative charge है. Electrostatic force के वजह से इस तरफ खींच रहे हैं electron को, even though it is crossing. Why? Because of this only. Exothermic redox reaction. मतलब क्या हो रहा है? Here reaction, this energy, exothermic means energy is released, right? That energy is taken by the electron, and that energy is more than the electrostatic force, and that energy is crossing, making the electron to cross from here to here. Okay, उसको battery mechanism बोलते हैं. Okay, so क्या है देखो? How does electron move from positive to negative inside against electrostatic force? Q is what happen? This happens due to exothermic chemical reactions.
which provides energy to electron. This is battery mechanism. Okay, physics में ज्यादा chemistry नहीं पड़ेगा ना, that's why they will simply mention battery mechanism की वजह से electrons are crossing from one position to other position. Okay, a force acts on the electron, battery force बोलते हैं inside the cell. Okay, so this is the negative terminal, this is a positive terminal. So electrons is crossing like this because of battery force, and electrostatic force is acting in this direction. So battery force is much greater than electrostatic force. That's why the electrons are crossing and completing the circuit. And this battery force is a non-electrostatic force. Battery is a non-electrostatic force. So now you understood about cell, electrodes, electrolyte, resistance, वगैरह we connected. See, you have to make your own career. Your parents up to certain time तक they will make you. After like थोड़ा पढ़ने के बाद job आने के बाद they will leave. Your career, your wish. They no one will depend on parents that time. मैक्सिमम कितना दिन मालूम है इसी आपका स्टडीज से 1 year एंड इंजीनियरिंग 4 years. सो मैक्सिमम 5 years में पेरेंट्स लीव करेगा. तब ओल्ड होने के बाद भी भाई दे विल टेल यू ओनली डू द जॉब, यू विल बी बिजी, फैमिली ऐसा रहेगा. सो यू हैव टू मेक योर ओन करियर. इतना हाई पोजीशन में लेके जाने का, दैट इज डिपेंड्स ऑन स्टडीज. कुछ तो सोचने का, करने का. अभी इनिशियली योर स्टेप इज टू गेट NITs. सो फुल फ्लेज में प्रैक्टिस करो. डोंट गिव अप. हार्ड लगेगा, एग्जाम में कम आएगा, वो लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं, ओके बट करो, टेक वन चैप्टर, डू स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करो. एक ना एक दिन आपको जो देख, समटाइम्स लकी भी रहने का, राइट. आपको देखेगा तो वो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किया वो क्वेश्चंस आ गया तो वो भी इजी हो जाएगा. सो एवरीथिंग शुड मीट एट वन प्लेस, देन ओनली रैंक एग्जैक्ट आएगा. ओके, हो गया. चलो चलो, नाउ विल गो फॉर द टर्मिनोलॉजीज. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF बोलते हैं. एंड EMF का सिंबल है E. ऐसा लिखेंगे E. कैपिटल E नहीं है, नॉर्मली E ऐसा लिखेंगे. ओके, सो व्हाट इज EMF मींस potential difference between two electrodes or terminals of a cell when no current is flowing through the cell. When no current is flowing, that time what is the potential difference across two electrodes is nothing but EMF. Okay, so इसका देखो, this battery is there, positive potential is there, this is negative potential is there. Okay, so मान लो this is 9 volts, right. The 9 volts लिखा ना, this is nothing but EMF. So simple language में, when you go for a shop to buy the cell, उसके ऊपर जो लिखा है 9 volts बोल के, that is the EMF. At that time any current is flowing in the circuit? No. देखो, no current is flowing through the cell. At that time that potential difference between the two electrodes is nothing but EMF. Okay, and EMF का सिंबल है E and units are volts. सपोज ये नेगेटिव पोटेंशियल है -3 volts. सपोज ये पॉजिटिव पोटेंशियल है +3 volts. ओके, और +6 volts. ओके, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? EMF कितना है? हायर माइनस लोअर करने का, 6 माइनस ऑफ -3 volts. सो कितना होगा? 9 volts बैटरी है. ओके, सो कभी भी 2 इलेक्ट्रोड्स रहेगा, 2 टर्मिनल्स रहेगा बैटरी में. इनसाइड देयर इज इलेक्ट्रोलाइट. कभी रिमूव किया इनसाइड सेल में? एक बार रिमूव करके देखो. हाँ, यू करेगा ना सात्विक. सो व्हेन यू रिमूव सम पाउडर रहेगा पूरा इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. सो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, 2 इलेक्ट्रोड्स रहेगा, एंड एक्सटर्नली इफ यू कनेक्टेड ए bulb will glow. Externally if you connected a bulb will glow. Okay, because of what? Chemical energy is converted to electrical energy. Okay, now समझ में आया ना वाला EMF का? EMF वाला सिंपल है. आपको when you go for a shop, if you buy a cell, उसके ऊपर when the current is not flowing, जो लिखा है बैटरी के ऊपर, that is EMF. Okay, next we'll do a experiment. Suppose we are thinking, okay, ठीक है, we are brought 9 volts battery. Okay, घर में 9 volts battery लेके आया. EMF, you have a 9 volts battery. Okay, I connected one ammeter लगाया, one resistance I connected 2 ohms.
Okay, here I connected voltmeter. Voltmeter should be connected always parallel to the circuit, right? Now calculations, I am thinking that calculations point of view में tell me find current and voltage across 2 ohm resistor. Find current and voltage. This is normal circuit, right? One resistance, one voltage. Current find करो. Voltage you know, current you know, resistance you know, current find करो. And voltage across 2 ohms. कितना ohms का यूज करो? कितना करंट है? E I equal to V by R by 2. It is 4.5 amperes. Okay. If this 4.5 ampere is flowing in the wire में, so कितना होगा? 4.5 into 2 is 9 volts battery. So that means we understood that we calculation point of view में current इतना flow करेगा and 9 volts will apply across the potential resistance बोल के आपको समझ में आया. Okay. But when you observe, मतलब ये सोच रहे हैं हम लोग ऐसा बैटरी लेके कनेक्ट किया तो ऐसा सोच रहे, but really when you come to the lab and when you connect a wire like this same setup, if I see, I will found the current is only 3 amperes only. If current is 3 ampere, what is the potential drop across the 2 ohm resistor is 3 into 2 is 6 volts. This is observation. ये हो रहा है, मतलब ये लैब में जाके चेक किया तो हो रहा है. Then why it is happening? Why it is happening? The current कम हो गया, voltage भी कम हो गया. बोलो. ये हम लोग सोच रहे हैं 9 वोल्ट बैटरी एक रेजिस्टेंस लगा इतना आएगा बोल के. ये बट इफ यू ऑब्जर्व इन द लैब में करेक्ट एग्जैक्टली सेम सेटअप इफ यू पुट विल गेट दिस करंट एंड वोल्टेज. वही बोलते हैं ना, नॉर्मली दिखाते हैं फिल्म में गन ऐसा व्हेन यू फायर अ गन द बुलेट एग्जैक्टली विल गो स्ट्रेट, ऐसा नहीं जाएगा ना. आपको व्हेन यू गो रियली व्हेन यू गो फॉर पुलिस डिपार्टमेंट द गन्स आर ओल्ड वन लाइक नियरली 15-20 ईयर्स का गन है. इधर इधर डाले तो इधर जाएगा, इधर तो इधर जाएगा. वो इतना रियल लाइफ में ऐसे रहेगा. ऐसे ही व्हेन यू थिंक एग्जैक्टली विल थिंक लाइक दिस, बट व्हेन यू गो प्रैक्टिकली it is 3 ampere and 6 volts. Why? Because of the second terminology called internal resistance of the cell. देखो, internal resistance of the cell. Okay. So internal resistance क्या हो रहा है? देखो, the resistance offered by the material of the electrolyte, the flow of current inside the cell. देखो, inside the cell I told you this is electrolyte, right? These electrodes. Here electrons are started coming in the electrolyte, right? This is electrolyte. Now electrolyte has molecules. Electrolyte has molecules. Okay. And when the electrons are crossing from here to here, plus to minus wala, it has to hit the molecules, right? It has hit the molecules. Matlab it is some resistance is our resistance means opposition. Some opposition is happening inside the cell. That opposition ko we call as internal resistance. मतलब indirectly what is happening when you connect this circuit really, so क्या होगा, it is like this. देखो cell 9 volts है, internal resistance is adding up to 1 ohm approximately, example I'm giving, and here it is 2 ohm connected right before, and this is voltmeter which we connected, and this is ammeter. Now find current in this circuit. Tell me current is how much? These two are in series, 2 ohm 1 ohm in series. So what is our I current कितना आएगा? 9 by 2 plus 1 is 3. So it is 3 ampere. And what is the voltage across 2 ohms? Tell me. What is the voltage across 2 ohms? The 3 amperes is flowing, right? 3 into 2, 6 volts. Okay. See now, I is 3 ampere, V is 6 volts. Okay. That means what is happening is when I connect a cell and when the current start flowing, that time some internal resistance also is eaten, some voltage will be eaten by this internal resistance. Okay. So kitna voltage eat kar, tell me, either current is flowing how many? 3 amperes, right?
So 3 into 1, 3 volts. So yes, actually this resistance is inside the cell only, but we cannot put inside it. Beside लगा रहा हूँ symbol के लिए, but is inside the cell. Okay. So this 9 volts में से 3 volts will be eaten by this resistor internal resistance, and we represent internal resistance as smaller. Internal resistance as smaller. So two terminologies will learn, EMF and internal resistance. Okay. So now last terminology. Okay. टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. So what is the definition? The potential difference across the terminals of a cell when current is drawn from the cell. Very important. When the current is drawn from the cell, then only terminal voltage will be coming into picture. Okay. So we learned this is cell. This is the internal resistance of the cell. Where it is smaller, and this is the EMF E. And external resistance capital R. This is external resistance. Okay. Now here current start flowing, right? Current start flowing. That means some voltage will be eaten by this resistor. That means terminals of a cell means from where to where? From here to here, or from here to here? Tell me. Terminals of a cell means from where to where? This is A, this point B, this point C. Tell me, what is the terminal voltage across the cell? Means AB or AC? Terminal voltage across the cell. Across the terminals of a cell. बोल तो AB या AC या? चल मैं जोर से बोलो, साथी बोलो. Terminal voltage means potential difference across the terminals of a cell. Terminals of a cell means positive terminal, negative terminal. So it is AB या AC या? AC. AC. Why? Because ये internal resistance is inside the cell only. We are putting beside, but internal resistance is inside the cell. ये दोनों एक cell के अंदर है. Okay. So what is the terminals across the battery means this and this, AC. So this is terminal voltage. This is terminal voltage. So voltage potential difference across the terminals of a cell. Terminals of a cell when current is drawn from the cell. Current निकल रहे तो then only this terminal voltage will be acting. And one more definition is there. I can tell this voltage terminals across the cell is nothing but terminal voltage across resistor only. Both are same, right? ये voltage कितना हुआ? ये resistance के across also voltage same, right? So क्या होगा? Other definition क्या है? Pick up it. Other definition क्या है? The potential difference across the external circuit. External circuit का potential difference and terminals across the cell का दोनों same है. So इसका formula है, लिखो V is equal to E minus IR. This is a formula for terminal voltage. V is equal to E minus IR is a formula for terminal voltage. Because some voltage will be eaten by this resistor, then add करने का मतलब E minus IR add remove किया तो will get V. इसके डेरिवेशन भी करेंगे थोड़ा आगे, किरचॉफ लॉस होने के बाद और भी क्लैरिटी समझ में आएगा, बट साइन कन्वेंशन यूज करके लिटिल बिट सॉल्व करेंगे. प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्विमिंग आप कर रहे हैं पूरा टाइम के साथ, ऑल सब्जेक्ट्स का इक्वल प्रेफरेंस देके टाइम का, और साथ ही क्या प्लानिंग कर रहे हैं थोड़ा एक्सप्लेन करो आपको. Sir, in college I'll have like 4 hours study hours. In that I'll complete everything. हियर After हियर coming ट्यूशन home पे and समझ में आ रहा है, स्टडी आवर्स पे 4 आवर्स बैठ के यू विल स्टडी. हां टेल मी, sir. 4 आवर्स विल डू क्वेश्चंस पूरा. ओह नाइस, वेरी गुड. And after coming home from till 7 I'll take a break. 7 to 8 I'll study and again dinner. Then till 10 I'll study and sleep. This is a recording class, right? I'll show your mother whether this all things correct or wrong. I can. Yeah. See, कोशिश करो. Only 6 hours, 6 hours नहीं, 6 months बाकी है आपको, तो अच्छे से पढ़ो नाइसली, फुल फ्लेज में. मतलब सी कभी भी you after finishing you should not think that okay if I would have done hard work I would have scored. ऐसा ना कभी भी नहीं, लाइफ में नहीं आने का. फुल एफर्ट्स दे दो, आया नहीं है बाद में, फुल एफर्ट्स दे दो.
आए तो आया, नहीं तो नहीं आया। बट आपको कभी भी ऐसा ये रिमेम्बर नहीं करने की कि अरे ऐसा कोई कोशिश किया तो हो जाता था, ऐसा मत करो। ओके, सो बीच बीच में प्लानिंग, फर्स्ट ईयर भी प्लानिंग करो, दैट इज द थिंग। बिकॉज इफ यू डोंट स्टडी फर्स्ट ईयर नाउ, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस गया काम से। फॉर्मुला रिमेम्बर बटा पूरा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट। फ्लूइड्स का पूछो, टर्मिनल वोल्टेज फॉर्मूला, वो सब क्या होगा मालूम है, दैट इज द प्रॉब्लम यू नो। मतलब 12 मार्क्स का गया, आइन इसमें फुल मार्क्स आएगा, रिमेनिंग 13 मार्क्स में फुल मार्क्स आएगा नहीं, उसमें सम 3 4 क्वेश्चंस जाएगा, बिकॉज हार्ड देगा कंपलसरी। सो मतलब यू आर अटेम्प्टिंग ओनली फॉर 8 क्वेश्चंस इसमें। Practically, when we talk to the base of the earth, ऐसा 8 questions। That's why no one will tell we आप plan करो, ऐसा ऐसा plan करो, but you have to take the one chapter। one chapter आपको, when you're taking one chapter, don't think of anything। अरे नहीं होगा, पोर्शन नहीं, वो छोड़ो। एक चैप्टर का नीटली पीवेक्यूज करो, नॉर्मली डोंट हैव टाइम, ओनली पीवेक्यूज करो, खत्म हो जाएगा। और क्या चाहिए? और नहीं करो, एक एक मार्क, एक एक चैप्टर में 1 1 क्वेश्चन ओनली कंपल्सरी आएगा। सो धीरे धीरे आपको सेकंड ईयर होता जाएगा, फर्स्ट ईयर भी पैरेलली विल बी एबल टू फिनिश। करें सर 12 मार्क्स में 10 मार्क्स तक आ गया तो अच्छा है ना, वो भी ऐड हो जाएगा। इफ यू कैन आंसर 20 20 20, यू विल बी इन स्टेट रैंकर इन ईच सब्जेक्ट में। 20 20 20 आउट ऑफ 25 तो कितना होगा? 60, राइट? 60 into 4 240। सो ऑलमोस्ट इन 99.999 एवरी ईयर में 200 ओनली, 99.8 99.6 आ रहा है, 200 रैंक। 240 है तो यू विल बी इन टॉप पोजीशन में। सो प्लान करो एंड यू हैव टू चूज। अभी देखो 20 में आप सोच रहे 20 में कैसा आएगा, बोलते डिवाइड करो। इफ यू सी केयरफुली, इन सेकेंड ईयर में यू विल हैव नियरली 6 चैप्टर्स, वेरी स्मॉल, 1 मंथ में हो जाएगा, वेरी स्मॉल। मतलब कोई भी आकर लास्ट में मुझे मुझे एनआईटी चाहिए, गुड रैंक चाहिए बोल, तो हम लोग सजेस्ट करेंगे वही है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स हैज 3 चैप्टर्स, 3 क्वेश्चंस कंपल्सरी आएगा, 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस भी आएगा कंपल्सरी उसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस विल बी कंप्लीटेड इफ यू सिट, इफ यू इट विल बी कंप्लीटेड विद 3 4 डेज में हो जाएगा, 3 4 डेज में हो जाएगा, इतना स्मॉल चैप्टर है। ईच चैप्टर में यू विल हैव नियरली 5 to 6 फॉर्मुलास मैक्सिमम, बहुत लेस फॉर्मुलास है। एंड सेमीकंडक्टर्स, वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी लेस फॉर्मुलास, थियरेटिकल क्वेश्चन विल बी कमिंग, स्मॉल सर्क्यूट देगा, नॉर्मल इजी वन। सो दिस इज द वन इजी वन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब एक क्लास में, एक 1 क्लास या 2 क्लास में हो जाएगा। सो हियर सी 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स डन। ओके, उसमें एंड फर्स्ट ईयर में इफ यू सी यू कैन डू 1 क्वेश्चन तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आएगा, स्मॉल चैप्टर ओनली, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एंड स्टार्टिंग वेक्टर्स एंड काइनेमेटिक्स यू कैन डू इजीली 1 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में। एंड लास्ट चैप्टर्स में कौन सा टोल यू, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो एंड काइनेटिक थियरी। काइनेटिक थियरी कितना टाइम लगेगा? काइनेटिक थियरी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, एंड दैट लास्ट में वो फार्मूला आरएमएस वेलोसिटी का, खत्म। काइनेटिक थियरी, थर्मोडायनेमिक्स। इफ यू सी हियर ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चंस आ गया इधर ही, मतलब ये पूरा इसमें। एंड दिस वन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स भी कितना टाइम लगेगा? और असल एलास्टिक, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, 4 फॉर्मुलास आते हैं, हम 100% क्वेश्चन आएगा कंपल्सरी उसमें। एंड इफ यू सी केयरफुली, वर्क फॉर एनर्जी आल्सो इजी ओनली, वर्क फॉर एनर्जी इजी ओनली। एंड वन मोर चैप्टर वेयर थोड़ा इजी है, थोड़ा मतलब फॉर्मुलास है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो ये वाला इफ यू प्लान आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चंस आ जाएगा, 1 1.5 मंथ में। इफ यू सिट यू विल गेट दिस ऑल थिंग्स। तो दिमाग से सोचो, ऐसा नहीं कि पूरा लगा के आई विल डू सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन, बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस करके क्या फायदा है एक क्वेश्चन के लिए। आप लास्ट में पकड़ो, फर्स्ट इजी वाला, थोड़ा ऐसा वाला को थोड़ा प्लान करो, आपको माइंड में बढ़ता जाएगा। नाउ इफ आई गो आई विल गेट 12 मार्क्स पक्का, ऐसा रहने का, दैट विल बी गुड। एंड some more like second year में current electricity also less number of formulas actually. If you circuit only, every time they will give one circuit देगा, they'll tell time, find the voltage, current, ऐसा easy chapter, this current electricity easy chapter. So इधर एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ऐसा चैप्टर्स आर देयर इन मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म मैटर, बिकॉज इसमें नियरली अर्थ मैग्नेटिज्म बिफोर था, दे रिमूव एवरीथिंग, दिस चैप्टर बिकेम वेरी स्मॉल, मैक्सिमम 1 क्लास 2 क्लास में हो जाएगा। So 13 questions इधर only you are able to see. So ऐसा you make a list, एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर वे में you have to prepare yourself and prepare, पक्का अगर रैंक नहीं आया तो पूछो।
यू डिवाइड इनटू इजी मीडियम हार्ड, ऐसे डिवाइड करो चैप्टर्स, विच चैप्टर, पूरे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव चांस टू रिमूव 5-6 चैप्टर्स निकल सकते हैं। ओके, ऐसे प्लान करो, प्लान करके खत्म करो, यू विल गेट। नहीं तो ये बैठ के नाम के वास्ते करके, आई एम टेलिंग यू, कॉलेज नेम बोलो, आई विल ट्राई राइट एंड गिव योर सैलरी, यू चेक आफ्टर 4 years के बाद, यू ओपन फर्स्ट जॉब आने के बाद ओपन करो, दैट इज द सैलरी, सेम सैलरी विल बी देयर। ओके, सो वेरी लेस सैलरी विल बी देयर, आपको मैक्सिमम मालूम है। बिलीव, अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, अभी भी नॉर्मल कॉलेज पढ़ के आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कितना आ रहा है मालूम है? मंथली 25,000 30,000, कंप्यूटर साइंस करके 4 years नॉर्मल कॉलेज में पढ़ के 25,000 30,000 के वो लोग ही, वो भी कैंपस में नहीं आके, बाहर जाके करके करके 20,000 भी होके बोल के। इफ द करियर स्टार्ट फ्रॉम 20,000, आपको 2 लाख आने के लिए मिनिमम 10 years लगेगा, पक्का। नॉर्मल कॉलेज में 10 years लगेगा आपको ये 2 lakhs आने के लिए, पर मंथ 2 lakhs आने के लिए। अरे एनआईटी में बिट्स पिलाने में, इफ यू गेट इनटू सीटेड, स्टार्टिंग सैलरी ओनली आपको 2.5 lakhs। My students already got NITs में, they finished also, they got the job also. They call करके बोल रहे सर, you remembered me बोल के। So ऐसा सैलरी वांटेड मींस फर्स्ट ईयर से, अब 10 years में कैसा रहेगा, इसके सैलरी नियरली 10 to 15 lakhs पर मंथ रहेगा, उतना अच्छा है। If you like, if you do experience करने के बाद again if you shift, right, they will ask what is your salary, current salary, they'll give some increment, that will be increasing हो जाएगा, एक निकल जाएगा। बट इधर तो आपको 20,000 करेगा, 2-3 years करेगा, 25 होगा, नेक्स्ट कंपनी जाएगा तो हाउ मच यू आर गेटिंग 25, आई विल गिव 27,000, ऐसे ही मिलेगा। दैट टाइम यू विल बी हैविंग द, यू कैन नॉट लीव द जॉब, यू कैन नॉट डू द थिंग्स, दैट्स व्हाई टीके बोल के ऐसा करेगा। बहुत जन, सब 98% पीपल आर डूइंग लाइक दैट। सो योर राइट टाइम, गुड अपॉर्चुनिटी इन योर स्टूडेंट लाइफ में टू गेट गुड कॉलेज में। नेक्स्ट नहीं आए तो नेक्स्ट आपको दूसरा चेक करना पड़ेगा, क्या है, कुछ बिजनेस था, कुछ दिस वन दैट वन, यू कैन थिंक ऑफ व्हाट एवर आइडिया, बट बेसिक स्टडीज वाइज में आई एम टेलिंग यू। ओके, सो थोड़ा प्लान करो ऐसे चैप्टर्स, यू मेक ए लिस्ट, यू मेड अ लिस्ट, अभी सब्जेक्ट यू मेड अ लिस्ट, यू रोट एनीवेयर? Yes, sir. I made a PPT. दिखो है, हाँ PPT type, all formulas and short notes type. फॉर्मुलास नहीं है, यू मेक लिस्ट पेपर में नीटली एक फाइल में लगा के, इजी मीडियम हार्ड। सो मुझे ये चैप्टर्स खत्म करने का फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ऐसे हो रहे, फर्स्ट सेकंड ईयर में इफ यू लिसन प्रॉपर वे में एंड इफ यू प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। सेकंड ईयर आपको टेंशन ही नहीं लेने का आपको। इफ यू आर लिसनिंग वन टॉपिक एंड डू एज नेक्स्ट क्लास आने तक आपको सेल्स का पूरा खत्म कर लो, देन दैट इज इनडायरेक्टली और रिवाइजिंग हो जा रहा है सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर भी पैरेलल करने का। ओके चलो, रोट राइट, नाउ डेरिवेशन करेंगे। v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का डेरिवेशन। देखो, दिस इज सेल, दिस इज इंटरनल डिस्टेंस ऑफ ए सेल ए बी, दिस इज आर, टर्मिनल वोल्टेज v। ओके, करंट इज फ्लोइंग, मान लो फ्रॉम हियर टू हियर, ऐसे करंट जा रहा है i, आई एम डिराइविंग व्हाट, दिस इज सेल राइट। सेल के पास व्हेन द करंट इज फ्लोइंग डेफिनेटली EMF will be, you know, इसमें this EMF, right, this EMF E. I'm interested to calculate terminal voltage. Terminal voltage means total across the cell क्या है, because internal current flow है ना, some drop will be there. Okay, so here you have to understand some sign convention. मान लो you are going from here to here, this is called path. Path means क्या है, you are walking from here to here, ting 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 बोल के walking कर रहे हैं। Okay, now if you see carefully, आपको साइन कन्वेंशन याद रखो, current is flowing, current should flow from higher to lower, right? So h to lower, right, higher to lower, and this cell ke, this is minus, this is plus, this is lower, this is higher. Okay, now you start from here and you have to, that your potential drop, sum of the potential drop is equal to this drop you have to do. Okay, so first step kya hai, VB. Okay, you tell me you are walking from here to here, you are going from higher to lower, right? So potential drop will decrease or increase? Higher to lower you are going, potential drop will increase or decrease? Tell me. Higher to lower जा रहा है, so potential drop will decrease. Decrease हुआ तो minus I into R, right? Next, again you are walking from here to here. Now cell में if you see, you are going from lower to higher, so potential drop will be plus, right? Plus E is equal to the sum of the potential drop is VA, ऐसा रहने का। So ये अप्लाई करने सीखो, किरचॉफ लॉ होने के बाद आपको और भी समझ में आ जाएगा।
सो करंट फर्स्ट आप करंट चूज करो एंड पाथ चूज करो, उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस को हायर टू लोअर, लोअर टू हायर देखो. हायर टू लोअर यू आर गोइंग माइनस आई आर लगा रहे हैं, एंड माइनस टू प्लस प्लस सी एंड इज इक्वल टू वी ए. सो नाउ आई एम ब्रिंगिंग दिस वन वी ए, दिस वी बी को इधर देख रहा हूँ, माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. What is VA minus VB is nothing but potential difference V is equal to E minus IR. खत्म. The terminal voltage is equal to E minus IR. तो ये स्ट्रेट लाइन का बनाना सीखो किरचॉफ लॉस का, ये आगे आएगा, समझ में आएगा. सो ये अंडरस्टूड राइट, ये कैसे अप्लाई करने के बोल के आगे भी आएगा. ओके, और वन मोर डिफरेंशिएशन आई टोल्ड यू. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? टर्मिनल voltage is the potential difference across the external circuit. External circuit, suppose I connected like this. Terminal voltage is also the terminal voltage across the external resistance, right? So क्या होगा? V is equal to I into R external. This is also potential difference. So first formula you learn in the cell, V is equal to E minus IR is a formula. This is easy chapter out of electrostatics में some formulas ज्यादा होगा, but इसमें this current electricity में less number of formulas are there. Circuits मजा आएगा, ऐसे solve करो. नेक्स्ट मैग्नेटिज्म स्टार्ट होने वाले हैं, इंटीग्रेशन वगैरह डेप्थ में जाना पड़ेगा. ओके, हाँ करो. तो फॉर्मूला मालूम है, V इज इक्वल टू ई माइनस आर. ए कार ऑफ फ्रेश स्टोरेज बैटरी EMF इज गिवन एज 12 volts and internal resistance is given, R is equal to 5 into 10 to the power of minus 2 ohms. A starter motor draws a current I is equal to 90 amps. The terminal voltage across the battery is how much? $7.5 Units? Volts only. 7.5 volts. फॉर्मूला याद है ना? E minus IR. E minus IR. Everything is given. E minus IR. Everything is given. Substitute, you'll get 7.5 volts. Okay? चलो. Now, different cases में, situations में we are seeing terminal voltage क्या होगा different case में. First case, discharging of a cell. Just now we derived, right? Discharging of a cell में, discharging means मतलब the current is given by the cell. This is called discharging case. Discharging case. Discharging case में terminal voltage आया E minus IR. We derived, right? E minus IR. Discharging case में. Now we will see charging case में. Charging of a cell. Charging में current is coming to the cell. Now derive करो, apply करके solve करो. The internal resistance smaller plus minus VA VB. This is a EMF E. Okay. मान लो the current is flowing like this. I. So current will flow from higher to lower, higher to lower. मान लो you are coming from, path is like this only. Path means you are walking from B to A. Now apply the sign conventions and find terminal voltage V, find karo. Same thing from here to, you start from VB. Here se start hoye, all potential drops is equal to VA. So VA, VB, tell me, you are coming from lower to, you are going from lower to higher. Lower to higher means आपको plus IR, plus I into R. Okay. Now minus to plus you are going. Lower to higher, right? So plus C is equal to VA. Sum of the potential drop is equal to VA. Okay. So I can bring like this, VA minus VB is equal to E plus IR. So VA minus VB is nothing but terminal voltage, E plus IR. This is the formula. देखो चार्जिंग में E plus IR होगा, मतलब here terminal voltage is greater than EMF, right? इसमें क्या होगा? terminal voltage is less than EMF.
चार्जिंग मतलब आपको क्वेश्चन में समटाइम्स मेंशन करेगा, चार्जिंग मींस करंट इज कमिंग टू द सेल, डिस्चार्जिंग मींस करंट इज गिविंग, द सेल इज गिविंग द करंट, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज। ओके, इन दिस केस में ई माइनस AR, ई प्लस AR। नेक्स्ट वन, सेल इन ओपन सर्क्यूट, उसमें टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करो। कैन टेल मी नो, सेल इन ओपन सर्क्यूट मतलब नो करंट इज फ्लोइंग, दैट टाइम टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू हाउ मच? When no current is flowing in the cell, there is no potential drop across the internal resistance. That means terminal voltage is equal to EMF. This only definition, right? EMF का definition क्या है? When there is no current in the flowing, what is the cell का across potential is nothing but terminal voltage. Both are same. Okay, very important. Cell is short circuited. Cell is short circuit means cell है, internal resistance है, R है, current is flowing, plus minus, I short circuited. Just wire connected, wire connected. So when wire connected, A and B are, you already know that potential is same. मतलब VA is equal to VB. That means VA minus VB is how much? Potential difference is 0. When the short circuited, potential difference is 0. That time current कितना जाएगा? Current is E by R. And this is the maximum current flowing in the circuit. When the cell is short circuited, मतलब terminal voltage is 0. At that time में the current will flow in the maximum current will flow. कितना है? That is E by R. E by R. Because why current is maximum? Because external resistance is 0. You are not connected external resistance, any bulb or some. Simply एक सेल लिया, एक वायर से कनेक्ट करो, पूरा आपको नॉर्मल सेल ले लो, टेक ए स्मॉल वायर, जस्ट कनेक्ट, विल गेट स्पार्क्स आएगा, बिकॉज शॉर्ट सर्क्यूट किया तो हाई करंट विल फ्लो। ओके, सेल देखो कभी, सेल में सिंपली कनेक्ट प्लस एंड माइनस विद ए स्मॉल वायर, स्मॉल सेल, आपको स्पार्क्स आएगा बोल के। ओके, external resistance is 0. Okay. One more definition of EMF is there. It is a work done by the cell in carrying a unit charge along the closed circuit. एक चार्ज को पूरा क्लोज सर्क्यूट को घुमाने के लिए कितना काम किया, that is called as EMF. So sometimes EMF is work done in a closed circuit upon charge. This also sometimes they will ask कितना वर्क किया और EMF कितना है, ऐसा। ओके, नेक्स्ट करो, आंसर करो। A driving current of 3 amperes for 5 minutes in electric circuit, 900 joules of work is to be done. Find the EMF. So work is given, he's telling to find EMF. $9,000. 1000, no? So 1. 1 volt. So 1. 1 volt is answer. Because minutes is converted to seconds always. Not clear? So EMF is equal to work done upon charge. But charge is not given, right? Q equal IT, right? So I into T. T should be in seconds. So 900 by current is 3 into T is 5 into 60. So क्या था? 1 volt है. Okay, 1 volt is coming, right? Because 300 3 cancel 1 volt. Okay. Circuit diagram draw करो always, so that you will not do mistake. What is the potential difference across the terminals of a cell? V चाहिए.
No. And EMF 2 volts has internal resistance 0.1 ohms. Is connected with the external resistance 3.9 ohms. What is the potential difference across the terminals of the cell? So this is a discharging case one, right? So V is equal to E minus IR. Answer. I find karo first. So these two are in series, right? So 3.9 plus 0.1 is 4. So what is current? V 2 by 4, 1 by 2, 0.5. Subscribe. So EMF is 2 minus 0.5 into R is 0.1. So 0.05. 2 minus 0.05. 1.95 volts. Internal voltage. Okay. If I know the current also, if I know the current, I can find one more method. Mein. What is the terminal voltage across external resistance is nothing but same as this one. External resistance, I told you, I into external resistance, right? If you multiply with 1 by 5, 1 by 0.5, right? 0.5 into this one. So you'll get 1.95. Okay? So, external resistance ka terminal voltage is same as that of this one. So, next. Okay. So potential difference versus current is given to you. He is telling, determine the EMF of the cell. What is EMF means? What is the definition? Graph say we have to identify. This is a graph they given. This is a graph. Uska base mein karo. What is the EMF of the cell? EMF of the cell means the potential difference across the terminals of a cell when no current is flowing. Current is zero. Can you tell me which may current is zero? V versus I given. Whether current is zero in y-axis or x-axis. Current is zero. Tell me. अनम्यूट करके बोलो शिवंगी. Then all I can know. Along y-axis. Y-axis में. Tell me कितना आएगा आंसर? If you extrapolate the graph ऐसा extend करने से, this point में the voltage मतलब there is no current, right? In this point में there is no current. So कितना है आंसर? The potential difference is nothing but EMF, right? So first answer is V is equal to 1.4 volts. EMF means when external there is no current. What is the terminal voltage across the cell is nothing but EMF. So when there is no current, the EMF is nothing but this one, 1.4 volts. Okay. Next one. Maximum current obtained from the cell. I max. When will be the current maximum? Cell को क्या करे तो maximum? Tell me. I max. Maximum current obtained from the cell. I max का कैसा आएगा? We done cases, right? Subject cases में. I max कब आएगा? External resistance should be 0. External resistance will be 0. मतलब indirectly short circuited, right? Short circuited. मतलब voltage is 0. Potential difference is how much? We studied, right? Potential difference is how much? देखा नहीं है? याद नहीं है? What is the potential difference when the cell is short circuited? 0. So which point में potential difference is 0? Tell me. At Which? 1.4. कितना? See, maximum current कब flow होगा? See, this is the voltage versus current. Okay, graph है. ये voltage versus current का graph ऐसा है. Okay, maximum current obtained from the cell. I max. Tell me. You won't tell. Current चाहिए. I max will be wherever the point is terminal voltage is 0. That is called I max. Terminal voltage will be 0 at which axis? Which axis में? Which axis? Along x-axis. Which point we should take, Marie? Touch or 0.28. so maximum current is I max is 0.28.
amperes. Okay. Now you know terminal voltage, you know Imax. Internal resistance of the cell. Find करो. Internal resistance of the cell. So Imax का formula क्या था? Imax is E by R. No, and this is nothing but EMF of the cell, right? EMF is 1.4. So R is equal to कितना होगा? 1.4 by 0.28. कितना? Into 100 into 100. So it is 140 by 28. So कितना? 4 to 28. 2 5 is 10. So 5 ohms or 0.5 ohms. 5 ohms is answer, right? This is the internal resistance. So आपको कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चंस करो बेस्ड ऑन सेल्स का. आगे किरचॉफ लॉस करने के बाद वी आर डूइंग सीरीज पैरेलल सर्क्यूट्स का सेल्स का करने वाले हैं पूरा. अदर देन सीरीज पैरेलल वगैरह छोड़ के नॉर्मल में आपको क्वेश्चंस करने का. सो एक लिख लो, हो जाएगा. टॉपिक डन. सो फैक्टर्स ऑन विच इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन, it depends on nature of electrolyte, area of electrolyte, distance between the electrolytes, temperature of the electrolyte. लिखो. इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड होगा कौन सा नेचर है, एंड एरिया पर डिपेंड होगा, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड पर डिपेंड होगा, इंटरनल डिस्टेंस. एरिया बड़ा है तो क्या होगा बोल के. डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड होगा, डिस्टेंस इंक्रीज का डिक्रीज किया तो इंटरनल डिस्टेंस विल चेंज. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेसर कॉन्सेंट्रेशन लेस डिस्टेंस, एंड मोर कॉन्सेंट्रेशन मोर मॉलिक्यूल्स मोर द इंटरनल डिस्टेंस. ऐसा. टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा टेम्परेचर किया तो इंटरनल डिस्टेंस विल डिक्रीजेस. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन. ये टॉपिक डन. नेक्स्ट में हम लोग किरचॉफ लॉस करने वाले सेपरेट टॉपिक.